11th physics. Then unit number 10 is going on. So in last class we discussed there how we can find their velocity, displacement and acceleration during the simple harmonic motion, and how we can find their energy, kinetic energy, potential energy and total energy, how we can find it. Okay, already we discussed these terms. Again we are discussing here some formulas of this one, then we will solve this question. Then here how we have discussed in our SHM इन सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने क्या था बेसिक सा फिर से रिवाइज कर रहे हैं. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले हमने क्या सोल्व किया था, डिस्प्लेसमेंट निकाली थी. डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या लिया था, लेट वी आर टेकिंग y इक्वल टू a sin ओमेगा t, दिस वन योर SHM इक्वेशन. ओके, विद रिस्पेक्ट टू दिस वन देन वेलोसिटी वी हैव सोल्व्ड. तो वेलोसिटी हमारी क्या आ गई थी, वेलोसिटी इक्वल टू योर v इक्वल टू योर dy by dt, differentiation of displacement with respect to time. So this one your a omega cos omega t. Okay, and in form of, you want to convert this one in form of the displacement, so we can write there omega under root here a square minus y square. This one our velocity only. So after this one your case of the maximum velocity and minimum velocity. Maximum velocity will be there, maximum velocity will be there in your SHM when particle will be on the mean position. So maximum velocity का होगी on mean position. Mean position पे maximum velocity होती है. So how we can find their mean position? So on the mean position a equal to your 0. So here a equal to will be equal to 0. So here left here y omega y. Okay, minimum velocity we can say minimum velocity it will be 0. Minimum velocity it will be 0 ऑन एक्सट्रीम पोजिशन. कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजिशन पे. ओके, जहां पे क्या हो जाता है एक्सट्रीम पोजिशन पे y इक्वल टू a. ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड बेटा एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमने किया था. एक्सेलरेशन हाउ वी कैन फाइंड देयर, सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट विल गिव अस एक्सेलरेशन. हाउ वी कैन सोल्व दिस वन, डिफरेंशिएटिंग दिस वन आफ्टर डिफरेंशिएशन, देन हियर लेफ्ट हियर a ओमेगा स्क्वायर, differentiation of this one a omega square, then here will be sin omega t minus will be there. Okay, so here sin omega t we can write by using this one y by a minus a omega square y by a to cancel out, then here left here minus omega square y. ये क्या आते हैं हमारे पास, एक्सेलरेशन आती है. मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होगी, ऑन द मीन पोजीशन. मैक्सिमम एक्सेलरेशन की कंडीशन क्या होती है, मीन पोजीशन ऑन extreme position. On the mean position acceleration becomes 0. On extreme position that will be maximum acceleration, that means y equal to your a. So on this one your y square a. This is the condition of the maximum acceleration. After that we solved their kinetic energy and potential. Fourth term we have to find out kinetic energy. Kinetic energy we can write there half mv square. After putting value of v, then half, here came your m, here will be a omega cos omega t whole square. Okay, so after this one then here left your m square, m a omega square cos square omega t. Then after that potential energy we have solved there. Potential energy by using their work done from their mean position to the extreme position, how we can find their work done in form of the restoring force. Okay, so this one our came 1 by 2 m omega square y square. This one came. Now after that total energy our came, that is 1 by 2 m omega square a square. ये हमारे पास क्या आ गई थी, टोटल एनर्जी आ गई थी. तो ये हमने डिस्कस किया था इन आवर लास्ट क्लास. सो यूजिंग दीज टर्म्स ओनली वी कैन सोल्व दिस वन क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे. हियर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एक्जीक्यूट SHM on a simple straight path, then amplitude of the oscillation is at 2 centimeter. Okay, these terms are given in our question. First we will write these terms, then we will start writing this one. Okay, so in our question given है बेटा 2 centimeter क्या given है, amplitude given है, when displacement from the mean position is a 1 centimeter. Displacement from mean position means here we have to find out, then y equal to your 1 centimeter. y क्या given हमारे क्वेश्चन में 1 centimeter given है. And amplitude of this one, your amplitude in our question is given your a is given your 2 centimeter. सेंटीमीटर में given है तो सेंटीमीटर में ही रखेंगे. The magnitude of its acceleration is equal to velocity. ये कह रहा है magnitude of its displacement equal to your
velocity. So using this one we have to find out time period. इसको term को use करते हुए हमें क्या find करना, time period find करना. First we are writing there this condition given. क्या condition हमारे पास, v equal to our acceleration. ओके क्या है ये, कैपिटल ए तो एक्सेलरेशन है बेटा, दिस वन आवर एम्पलीट्यूड. सो यूजिंग दिस वन टर्म देन वी विल फाइंड देयर वेलोसिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. वेलोसिटी अभी हमने फाइंड की थी हमारे रिलेशन में, हमने डिफरेंट फॉर्मूला फाइंड किया था वेलोसिटी. वेलोसिटी इज दिस वन हियर, दिस वी कैन राइट देयर इन फॉर्म ऑफ दिस वन. ओके राइटिंग दिस वन देन हियर वी कैन राइट ओमेगा, वेलोसिटी क्या आ गई, ओमेगा under root a square minus y square. This one our velocity equal to your magnitude. ये कह रहा है कि magnitude of this one. So we will need their negative sign. So here we can write there omega square y. क्या आ गया हमारे पास, ये दोनों का रिलेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने वही लिखा ही है कि मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और इक्वल टू वेलोसिटी मैग्नीट्यूड दोनों आपस में इक्वल है. सो अप्लाई दिस वन कंडीशन एंड सोल्व दिस वन, बट विच टर्म वी कैन फाइंड देयर आफ्टर सॉल्यूशन दिस वन. सो आफ्टर हियर देन 1 ओमेगा टू 1 ओमेगा कैंसल आउट. सो हियर लेफ्ट अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा y. ये बच गया. अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड वी विल टेक अ स्क्वायर. दोनों साइड क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. ऑन बोथ साइड वी विल टेक स्क्वायर. हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड हियर लेफ्ट ओमेगा y. This one left na, so remove this one under root, then take both side whole square, then this one to this one cancel out. So here left a minus y square equal to omega square y square. Clear? Okay. After that we can use there here this one, using this one factor. Here left na this one. Okay, so using this one then here will come beta a square minus y square equal to omega y. Now here value are given, y equal to 1 centimeter, then a equal to 2 centimeter. Put this one factor, y equal to, y given आपको 1 and here putting this term, this one our amplitude given 2 and their square minus 1 will be there, displacement is given, then omega square 1 is there. Okay, then solve this one, then here will come 4 minus 1, then omega square, then after this one here omega will become under root 3 radian per second. Okay, omega की radian per second. So after this one omega, when we will this one, then omega is come out, then after that we will check their which term we have to find out. Find the time period and also their maximum velocity and maximum. So time period, how we can find their time period. टाइम पीरियड अगर ओमेगा हमारे पास आ जाता है तो ओमेगा के लिए टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. वी शुड नो अबाउट देयर फॉर्मूला ऑफ दीज टर्म्स, हाउ वी कैन फाइंड देयर t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. सो t वी कैन राइट देयर t इक्वल टू 2 पाई एंड ओमेगा आवर केम हियर अंडर रूट 3. तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 बाई अंडर रूट 3 पाई. दिस वन आवर टाइम पीरियड ड्यूरिंग दी SHM. उसके बाद कह रहा फाइंड देयर मैक्सिमम वेलोसिटी. मैक्सिमम वेलोसिटी तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, a इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. वेट दिस वन आवर here velocity equal to your velocity. First we will write their velocity equal to a omega square minus here a square only will become this one wrong, we will erase it. Wait for some time. Your maximum velocity will be equal to your a square minus omega square. Then here maximum velocity during the SHM it will be on the
mean position, and on the extreme position at body will be oscillate from mean to extreme position, then there will be velocity becomes 0. So here we will write their amplitude A will be equal to 0. Then we will use this one relation. हम क्या यूज करेंगे, इस रिलेशन को यूज करेंगे. So here discussed बेटा this one formula of the velocity. वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया था, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. दिस वन आवर वेलोसिटी. सो फॉर फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी हमने क्या यूज किया था, ओमेगा वाई. ओके, ओमेगा वाई कहां से आया था, यूजिंग दिस वन रिलेशन. देन हियर ओमेगा 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 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y square. This one our velocity only. So the maximum velocity at this one we are taking during this one, then on the mean position then velocity becomes maximum, but as the bow will be go on the extreme position then velocity becomes 0. तो यहाँ पे extreme position पे क्या condition होती है, displacement maximum हो जाती है. So that's why we can write there y equal to a. Okay, but on this one mean position displacement becomes 0. Okay, displacement क्या होती है, 0 होती है. So as we will put here, then maximum velocity will be on this one position. So omega we can write there under root a square minus here 0. So here left omega under root a square, then this to this cancel out, then omega a, this one will give us maximum velocity. So as we will put there omega and there a, omega हमारे पास क्या आया था under root 3, और क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड क्या गिवन आपको, amplitude in given in your question, this one our equal to your 2 only. Okay, amplitude given here 2 only, that's why here we will write there 2. Then maximum velocity will be there 2 under root 3 meter centimeter per second. Here centimeter given na, so we will write it centimeter per second. This one, like this one we can find their maximum velocity. Next here we have to find out maximum acceleration. Maximum acceleration, how we can find beta, our formula of acceleration minus omega square y. Yes na, this one. So in this one case of your pendulum SHM, so if here will be bow on the mean position, then on the mean position displacement becomes your 0, but as body will reach on this one position then velocity becomes 0, but velocity will be, acceleration will be maximum on this one point. क्या होता है, acceleration will be maximum. So on this one position y becomes your a. Y क्या होता है, एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाता है. एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. तो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है, y इक्वल टू a हो जाते हैं. सो वी विल अप्लाई दिस कंडीशन हियर. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a. मैग्नीट्यूड की बात करें, दिस वन ईयर मैग्नीट्यूड ऑफ ईयर a. ओके, ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ गया. तो हमने क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम एक्सीलरेशन. तो ओमेगा हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 स्क्वायर, देन ए इज आवर, ए क्या हमारे पास, एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड क्या गिवन है क्वेश्चन में, 2 सेंटीमीटर. दैट्स व्हाई हियर वी विल राइट 2. देन सोल्व दिस वन, देन हियर लेफ्ट योर 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. Okay, I hope you understood beta how we can find their speed, time period, velocity and acceleration. And here maximum and minimum, keep in mind where will be maximum and where will it will be minimum. तो velocity तो minimum कहाँ होती है, extreme position पे, जहाँ से body क्या है वापस oscillate करना start कर देती है. तो extreme maximum position पे velocity 0 रहेगी, और mean position पे velocity क्या रहती है, maximum रहती है. mean position पे maximum velocity रहती है, और acceleration opposite होती है. acceleration will be equal to 0 on the mean position and it will be maximum on the extreme position, जहाँ पे displacement भी maximum हो जाती है. due to maximum displacement it will be equal to amplitude only. Okay, so I hope you will keep in mind these all terms on factors, how we can find their these terms. So now next one topic is our force law for the simple harmonic motion and the expression for the time period. Okay, this one our time period. How we can find this one? Okay, so during this one your simple harmonic motion and your time period during, then as we are taking this pendulum only, क्या लेके चल रहे हैं, this one your simple harmonic motion के अंदर कोई भी आपका क्या कर रहा है, oscillate कर रही है, any body is oscillating there, then during this one force will be act there, that is restoring force, then try to be body will be come back, जिसमें body क्या है वापस आने के लिए try करती है. restoring in SHM F equal to, we can write there
MA. We can write there MA, where A is acceleration, where A is acceleration, not your amplitude. Acceleration यहाँ पे amplitude नहीं है. Okay, so we know acceleration A equal to A, हमारे पास acceleration क्या होती है? A equal to minus omega square y. ये के थे सभी फॉर्मूले. So acceleration equal to this one here. Then force we can our force due to the body of mass is m oscillating along the mean position. Okay, so here we can write beta, let an object of mass m, okay, oscillating SHM motion. So F equal to ma we can write there. As body is displacing in this direction, body can't displace कर इस direction में कर रही है, so restoring force will be act in this direction, that will be equal to your opposite direction. That's why here we will take their negative. So now during SHM, restoring force will be there, which is opposite direction of displacement, जो क्या है displacement के opposite direction में लग रहा है. So how we can write beta this one restoring force? We can write, so restoring force we can write there F is equal to your minus ky. Okay, we are taking a displacement y, that's why we are writing there ky, then displacement will be equal to ky. Negative sign is indicating displacement and this force are acting in opposite direction. जहाँ body oscillate करके displacement करेगी, force try करेगा, it will come back on the mean position, कि body oscillation के बाद वापस mean position पे आ जाए. तो दोनों की displacement force की direction opposite होती है, that's why we are using this one. So using from equation first and second equation, then we can write here first equation हमारे पास क्या आई थी? This one here, F equal to minus m omega square y. So using this one, then here we can write there m omega square y minus, then here we can write there minus ky. So minus to minus cancel out, y to y cancel out. So here left here k equal to m omega square. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओमेगा इक्वल टू यार अंडर रूट के बाई एम. m इधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, एंड दिस वन स्क्वायर विल बिकम्स देयर अंडर रूट. सो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k बाई m. दिस k वी कैन राइट बेटा स्प्रिंग फैक्टर, वेयर k इक्वल टू आवर स्प्रिंग फैक्टर, k इज आवर स्प्रिंग फैक्टर, and your m will be equal to inertial factor. Okay, so using this one, then omega we can write there under root here spring factor divided by your inertial factor. हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी? ओमेगा इक्वल टू दिस वन. सो आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड. हाउ वी कैन फाइंड देयर टाइम पीरियड during SHM. So we know about this one. What is the relation for your SHM for time period? Then time period will be equal to, time period क्या होता है? That is equal to your T equal to, as we know, total time taken during one complete oscillation is known as time period. Okay, so now
टाइम पीरियड वी कैन राइट देयर 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई बाई ओमेगा। और अभी सोल्व किया था हमारे पास ओमेगा। ओमेगा सोल्व करने के बाद क्या आया था, हमने यही फैक्टर यूज करना, ओमेगा इक्वल टू स्प्रिंग फैक्टर बाय द इनर्शियल फैक्टर, दैट इज ओमेगा इक्वल टू आवर, एज वी नो ओमेगा हमारे पास क्या आया था, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट आवर स्प्रिंग फैक्टर बाय inertial factor. Okay, spring factor we can say that is a force per unit length. Okay, here spring factor will be force per unit displacement. Per unit displacement is known as the spring factor. Spring factor किसको बोलते हैं, force per unit length. Okay, and your inertial factor stands for the stands for the mass of the body. Okay, so like this one we can find with omega we can write like this one, then put omega here, then after putting this one, then here we can write there this one equation here, third equation we can write, put value of omega in equation third. Okay, which equation? Third, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, अपोजिट हो जाएगा ना, इधर क्या आया था spring by initial, then divide by, here we will put, then it will give us inertial factor by the spring factor. Okay, so this one will give us inertial factor by spring factor. This is the time period during your simple harmonic motion. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई भी बॉडी ऑसिलेट कर रही है during SHM, so how we can find time period during the simple harmonic motion due to oscillation of any body, that is 2 pi by under root inertial factor by the spring factor. Inertial factor stand for the mass of the body. अगर body oscillate कर रही है then how much mass will be there, then it will be inertial factor. And this one spring factor will be there, then by using this one here restoring force, then F equal to your directly proportional to X, then it will be your constant. Okay, this one K constant is indicating our spring factor, K equal to force per unit here displacement. So we can write there spring equal to force per displacement is known as a spring factor in our time period. Okay, so next we will do beta time period during the simple pendulum. How we can find their time period during simple pendulum. We are doing the application of SHM. Okay, this one of the application of your simple harmonic motion, your simple pendulum. So if your simple pendulum is there, then how you can find their time period during the simple pendulum? Let here we are taking a stand, on this one stand we are hanging a bob, and that bob is oscillating there, then we can call it this one our simple pendulum. Okay, how it will oscillate, then initially let we are applying this one, then it will displace this one from here to there, then after they displacing from here to there, then it will be reach on this one position. कहाँ reach होगा, इधर maximum position पे reach होएगा. So if mass of this one bob we are taking m, then how much weight will be there, mg weight will be there, that always will be vertical downward direction. Weight हमेशा कहाँ लगता है bob का, vertical downward direction में लगता है. If this one is our theta, so here this one angle also we can write there theta, and this one component we can write there mg cos theta, and how much component will be left there mg sin theta. Okay, यहाँ पे कितना component आएगा, mg sin theta.
Clear? So here restoring force will be act toward this one mean position. We try to be come back on the mean position. तो यहाँ पे restoring force को balance करने के लिए कौन सा component आएगा हमारे पास mg sin theta. Okay, so same method we will apply there like this one general case we have done your time period for simple pendulum. We will find here initial factor and spring factor, both factor during this your pendulum. Okay, so let we are taking here, let a simple pendulum having a bob of mass m. Okay, oscillating along mean position के along कर रहा है, oscillate कर रहा है. Okay, and length of bob is L. Okay, मास क्या है bob का m है, लेंथ क्या लेके चल रहे हैं हम L लेंथ लेके चल रहे हैं. Okay, so now as bob reach on extreme position, extreme note that it will be positioned on that point, displacing there, y displacement is there, then here we will resolve there, then T tension is there, T tension in string, so restoring torque will be there, restoring torque will be act on pendulum के ऊपर क्या लगेगा, restoring torque लगेगा, which try to be body will be come back. Okay, which try to decrease its angle, जो इसके एंगल को क्या करता है, डिक्रीज करने के लिए ट्राई करता है. So how much torque will be there? So restoring torque we can write there, 2 equal to, we know about this one, force into displacement will be there. Okay, so how much force will be there, that is equal to mg sin theta. कितना फोर्स लग रहा है, mg sin theta. रेस्टोरिंग टॉर्क को जो बैलेंस कर रहा है वो क्या हमारा, इधर रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा और इधर कितना कंपोनेंट आया हमारा, mg sin theta. Okay, this one component will balance this one. So if your length of this one displacement, let we are taking L, so here we can write the torque equal to mgl. Okay, so after this one, if theta is very small, small कितना है, theta is your approximately less than your 10 degree. Okay, 10 degree से भी क्या है, कम है, this one here less than 10 degree, 10 degree से भी कम है. So we can write there sin theta similar to your theta only. So this one equation we can write there, here first equation, this one 2 we can write there, 2 equal to mg theta into your L. This one will become our second equation. Then restoring torque will be acting there, that is balanced by there some component of the weight, that is mg sin theta. Okay, another component will be act now if your restoring torque theta is directly proportional to the directly proportional to theta. Okay, displacement कितनी हो रही है उसके directly proportional रहेगा. So second component we write there directly proportional to the k theta. Okay, so magnitude we are finding there. So here we can write there this one our third equation. हमने क्या निकाला, magnitude निकाला है. So opposite direction. So here from equation
सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को यूज करते हुए हमने क्या निकाला, एम जी थीटा एल इक्वल टू आवर के थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के इक्वल टू आवर एम जी एल। ओके, तो हमारे पास ये क्या आ गया, स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग फैक्टर ड्यूरिंग आवर सिंपल पेंडुलम। ओके, दिस वन स्प्रिंग फैक्टर ड्यूरिंग दी सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पे हमारे पास स्प्रिंग फैक्टर क्या आया है, एम जी एल। ओके, एंड इनिशियल फैक्टर एज वी नो इन सिंपल पेंडुलम हमारे पास इनिशियल फैक्टर क्या आएगा, एम एल स्क्वायर। एम इज अ मास, देन एल इज अ length of this pendulum, that's why we will write their initial factor equal to ml square. This one we can write their initial factor, that is equal to initial factor. Using these both factor, here we can write there this one here fourth equation, this one our fifth equation. So time period during simple pendulum we can write there time period during your pendulum, we can write there t equal to our 2 pi by omega. ओके, अभी हमने फोन सोल्व किया था सिंपल पेंडुलम के अंदर क्या आता है, 2 पाई अंडर रूट आवर इनिशियल फैक्टर डिवाइड बाय स्प्रिंग फैक्टर। तो हमारे पास सोल्व करने के बाद क्या क्या आ गए फैक्टर, यूजिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, यूजिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को हम यूज करें। फोर्थ फिफ्थ कौन सी इक्वेशन हमारे पास, ये और ये, इन दोनों फैक्टर्स को यूज करते हैं, उन दोनों की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको सोल्व करने के बाद ये टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट इनिशियल फैक्टर योर एम एल स्क्वायर एंड स्प्रिंग फैक्टर हमारे पास क्या आया है, एम जी एल। Okay, so after this one here solve this one, solution this one, then m to m cancel out, l से l cancel out, तो हमारे पास क्या बचा, t equal to 2 pi under root our l by g. I hope you understood beta. This is the time period during our simple pendulum when bob is oscillating during this one, then total time taken by this pendulum during one complete oscillation. कि अगर हमने ये पेंडुलम अगर ले रखा है, बोब ओसिलेट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा और वापस इधर आएगा, तो एक ओसिलेशन कंप्लीट होने के बाद वापस इधर आएगा, मीन पोजीशन स्टार्ट हो रहा है, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, वापस मीन पोजीशन पे आएगा, तो टोटल टाइम ड्यूरिंग वन कंप्लीट ओसिलेशन उसमें कितना लगेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट बाई एल बाई जी। ये मास पे डिपेंड नहीं करता, हियर वी कैन से टी डज नॉट डिपेंड अपॉन दी, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बोब। बोब का मास चाहे कैसा भी हो, इस पे डिपेंड क्या है, और एक्सेलरेशन, so depend upon length only, not depend upon the length, whatever mass will be there of this bob, no depend. Okay, I hope you understood beta how we can find their time period during the simple pendulum and during the simple harmonic motion. Okay, thank you for watching today our video. In next class we will discuss some questions better related with it.